Now as we know, as we have discussed earlier also, that balance sheet has two sides, liabilities and asset. Here we are discussing only the liability side. Why? Because share capital is the liability of the company. So here you can see two sides, the left and the right one. On left side we have amount of the previous year, and on right side we have amount of the current year. The first and foremost portion which is shown in the share capital is authorized share capital. Under authorized share capital, we need to mention whether the company is authorized to issue equity shares or the preference shares. If the company is authorized to issue both type of share capital, then both type of share capital needs to be mentioned here. So we will be writing dash number of equity share of rupees dash each and dash number of preference shares of rupees dash each. After authorized capital, we need to mention issued share capital. ऑथोराइज में से कितनी कैपिटल हमने इशू की है, एंड दिस इशूड कैपिटल इज ऑल्सो मेंशन्ड सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर्स एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. So we will be writing dash equity shares of rupees dash each and dash preference shares of rupees dash each. And again we will be mentioning of the above shares how many have been allotted for the consideration other than कैश. अगर हमने शेयर्स किसी को लैंड लेने के बदले में दे दिए हैं या प्रमोटर को किसी सर्विसेज के बदले में दे दिए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने शेयर्स हमने प्रमोटर्स को इशू किए, कितने शेयर हमने लैंड के वेंडर को या फिर किसी भी एसेट के वेंडर को इशू किए, और कितने शेयर हमें कैश के अगेंस्ट इशू किए हैं. So everything needs to be mentioned very clearly under the heading issued share capital. Subscribed share capital. Here also we will be mentioning separate headings for equity shares and the preference shares. Out of these subscribed share capital, the company needs to deduct the calls which are yet not paid by the subscribers. So कितने शेयर हमने सब्सक्राइब करवाए, उनमें से कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें अभी कॉल पे नहीं हुई है, और कितने शेयर्स ऐसे हैं जो फोरफीट हो गए हैं, और कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनके बदले में हमें पहले से ही अनकॉल्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स इन एडवांस मिल चुकी है. तो इन सब का एडिशन और डिडक्शन करके ही हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में शो करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी डिडक्टिंग all sorts of call unpaid either by the director or by the others from the subscribed share capital, and then adding thereon any sort of shares which were forfeited and any sort of calls which were paid in advance by the shareholders. So this is how we show the share capital in the liability side of our balance sheets. Now let us discuss it with an example. Quality Motors Limited was registered with a nominal capital of rupees 10 lakh divided into 5,000 equity shares and 5,000 preference shares of rupees 100 each. The company offered 3,000 equity shares for subscription with payment on application rupees 20, allotment rupees 40 and on first call rupees 20. Public subscribed all the shares and paid the amount with the exception of 200 shares on which calls was not received. So we need to show how the share capital will appear in the balance sheet. Now we are going to prepare the balance sheet of Quality Motors Limited as on. Here we need to mention the date. Normally it will be 31st March of the year. For the sake of simplicity, we are omitting the left hand side, that is the amount for the previous year. So here we will be showing only the liabilities and the amount of the current year. Under liability, as we have discussed earlier, our first heading will be authorized share capital. Now from example, it was clear that company was authorized to issue 5,000 equity share of rupees 100 each and 5,000 preference shares of rupees 100 each. So here we will be writing both the sentences, and the amount in the current column will be 5,000 into 100 for equity shares and 5,000 into 100 for preference share.
So the total authorized capital which will be shown in the balance sheet will be 10 lakhs. After authorized capital, our next column will be the issued capital. जितनी कैपिटल से कंपनी ऑथोराइज्ड थी उतने में से कंपनी ने कितने के शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, वो हमें लिखने पड़ेंगे इशूड शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर. सो यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. इसका मतलब कंपनी जो 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकती थी उसमें से उसने सिर्फ 3 लाख के शेयर इशू किए हैं. सो इस तरीके से हमें ये पता चलता है बैलेंस शीट से कि कंपनी के पास कितने शेयर इशू करने की पावर है और उसने अभी कितने शेयर इशू किए हैं. यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी की फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हो सकते हैं. सो आफ्टर इश्यूड कैपिटल वी आर गोइंग टू शो द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हमने स्टडी किया कि 3000 इक्विटी शेयर्स कंपनी के 100 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मार्केट में दिए और लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया. सो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विल बी 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज पर शेयर, टोटल कम्स टू 3 lakh. After subscribed share capital we are going to write called up capital. So when from the example we have seen that there were 200 shares which has not paid the final call of ₹20 each. So on 200 share multiplying by ₹20, it means that 4000 rupees has not been received by the company though they were called up. So under called up capital what we are going to write is 3000 shares multiplied by ₹100 because company has called up whole of the amount. It will give us 3 lakh. So called up capital is ₹3 lakh, and after called up capital we are going to write the paid up capital. Paid up capital will show the amount which has actually been paid up by the shareholders. So here the amount which has been paid by the shareholders is 3 lakh rupees minus 4000. 4000 in the sense that we have not received call on 200 shares at rate of ₹20. So the paid up share capital will be 2,96,000 rupees. So this is how we show share capital on the liability side of our balance sheet. यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज्ड थी. उसने 3 लाख के शेयर जब इशू किए तो वो हो जाती है हमारी इशूड शेयर कैपिटल. अब इस 3 लाख के 3 लाख शेयर्स को लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बिकम इक्वलेंट टू इशूड कैपिटल दैट इज ₹3 lakh. 3 लाख में से 3 लाख ही कंपनी ने कॉल कर लिया हुआ है, यानी कि पूरे के पूरे 100 रुपीस जो हर शेयर के हिसाब से बनते थे कंपनी ने उसको मंगवा लिए हैं. तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 3 lakh. इसमें से 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने हमें कॉल नहीं दी 20 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 2,96,000, 2,96,000 rupees. Now let us see the accounting treatment of issue of shares in the books of accounts. So when application money is received, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के साथ वो एक तरीके से ऑफर होता है लोगों के लिए that yes now the people can apply for the shares of the company, and when people apply for the share of the company they do send some sort of application money. जब तक हम उस शेयर को अलॉट नहीं कर देते तब तक जितना भी मनी हमने शेयर्स के साथ शेयर्स की एप्लीकेशंस के साथ रिसीव किया होता है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एप्लीकेशन मनी अकाउंट ओनली और शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट ओनली. वंस after the allotment has been made, then this share application account will be transferred to the share capital account. Share application account is a personal account, and as per the rule of personal account, debit the receiver and credit the giver. So when the company is receiving the money, company will debit it, but we need to see that who is going to give that money. Shareholders are giving the money and we have opened share application account for shareholders only.
So it belongs to individual shareholders. So here we are going to credit the share application money account. Now see the journal entry. Our entry will be when we are receiving the money, we are receiving what? We are receiving bank account. And bank account is a real account. As per the rule of real account, debit what comes in. So here the money is coming towards the company, in the company. So bank account will be debited to what? To share application account. And narration will be being application money received on dash number of shares. We need to mention the number of shares on which the application money has been received. The second step in this respect is when allotment is made. जब कंपनी उन शेयर्स की अलॉटमेंट कर देती है तो सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन का सारा मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. एंड शेयर कैपिटल इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट. सो व्हेन अलॉटमेंट इज मेड, our journal entry will be share application account debit to share capital account. Narration being application money received on dash shares transfer to the share capital account. इसके बाद ड्यू होती है हमारी अलॉटमेंट मनी. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई और 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए या 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए. तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया है वो मनी या तो हम रिफंड कर देते हैं या फिर आने वाली अलॉटमेंट या फिर कॉल्स में हम एडजस्ट कर लेते हैं. नाउ लेट अस सपोज वी आर रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी. जब हम उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वाई टू बैंक अकाउंट? बिकॉज बैंक इज अ रियल अकाउंट. और जब भी हम उस मनी को रिफंड करेंगे देन रूल ऑफ रियल अकाउंट विल से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हियर द मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंपनी, सो वी विल बी crediting the bank account. And the narration will be being application money received on dash much shares now refunded. Then when allotment money becomes due on the shares which have finally been allotted to the shareholders. जब हम allotment money को ड्यू करते हैं, allotment account being a personal account, तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है? share allotment account debit to share capital account. Being allotment money due on dash much number of shares at rate of rupees dash. जितने भी अमाउंट से allotment money ड्यू होनी है उतना अमाउंट हम नरेशन में मेंशन कर देंगे. When allotment money is received तो हम डेबिट किसको करेंगे? जो आ गया हमारे पास, यानी कि बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर allotment account. Being allotment money received on dash much number of shares at rate of rupees dash. जितने से भी हमें allotment money रिसीव हो जाती है उतनी मनी से हम allotment account को क्रेडिट कर देंगे. When first call becomes due, जब हमारी पहली कॉल ड्यू बनती है तो फर्स्ट कॉल भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन हम लिखेंगे बीइंग first call money due on dash much number of shares at rate of rupees